So after anterior abdominal wall and inguinal canal, the next topic is male external genitalia. The testes, scrotum and the penis. Let us start discussing about scrotum. The testes are kept outside the body because body temperature is, how much is the body temperature? किती असते? 30? आणि how much temperature is needed for spermatogenesis? 1 to 2 degree less. बरोबर? तो वो ओरिजिनल कंसेप्ट था 37, 38 के बीच में बॉडी टेम्परेचर रहता है, उससे 1-2 डिग्री लेस रहेगा तो टेस्टिस को बाहर रखा. ऐसा गॉड ने प्लान बना के हमको इधर भेजा और हमने बाहर का टेम्परेचर ही 42 कर दिया. टेस्टिस को भी लगेगा कि यार अंदर ही ठीक है, बिकॉज बाहर टेम्परेचर इतना है, द होल पर्पस गेट्स डिफीटेड. बाहर का टेम्परेचर 40 है, 42 है. दैट इज वन रीजन. दैट इज वन रीजन. आज आपको कहीं पे भी जाओ, infertility clinic, come to us, we will give you a baby, boy, girl, bachchu, happiness, because spermatogenesis is severely affected in today's day and age. Before we start with the topic of testes, I would like to discuss the layers of the scrotum, which are very easy from the skin to the testes. The first layer is skin, which is hairy, and therefore comes the first layer जो है ना, skin which is hairy. हेयर के साथ फ्री में आते हैं sebaceous glands. sebaceous gland के साथ में आती है sebaceous cysts. So that is one area, scrotum, where sebaceous cysts are formed. Hair होते हैं. Another reason sebaceous cysts are formed there because जो पेरिनियल रीजन होता है उसका हाइजीन हम लोग मेंटेन नहीं करते. You know, हम लोग सुबह एक बार नहाते हैं and then we put on our underclothing which remain almost for 24 hours. हमारे इसमें रिकमेंडेशन होता है कि दिन में 2 बार बात लो, 3 बार लो, 1 बार, सॉरी आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, 1 बार तो लो. हॉस्टल के लोगों के सामने सॉरी, एटलीस्ट 1 बार, बिकॉज वो स्वेट होता है, स्वेट ड्राई होता है, देन दैट बिकम्स अ नाइस मीडिया फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो, फंगस टू ग्रो, एंड देयरफॉर विद सेबेशियस सिस्ट्स होते हैं. स्किन के नीचे क्या आता है? लेयर नंबर 1 स्किन. स्किन के नीचे क्या आता है लेयर? सुपरफिशियल फेशिया which is absent in the scrotum. Instead, the superficial fascia is replaced by a muscle called as dartos. Why it is absent? Because superficial fascia is fatty. Fat retains heat. जैसे आप वजन पुट ऑन करोगे, लाइफ में होगा, सबके साथ होगा, तो आपको फिर स्वेटिंग होता है, बिकॉज फैट रिटेन्स हीट. ओके, तो फैट इफ इट इज रिटेनिंग हीट, यहाँ पे एक फैट का लेयर दिया, अरे बाबा इसको कूल डाउन करने के लिए टेस्टिस को बाहर रखा था ना,
और ऊपर से अगर एक फैट का लेयर मार दिया, so then that whole purpose is defeated, therefore fat is replaced by dartos. Dartos contracts and relaxes as per temperature. अगर टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप होता है, that time dartos contracts, so the scrotum becomes slightly tight. When there is heat, the dartos relaxes, so that lot of heat can be released. But when a person goes to a cold region, that time the dartos will contract. So layer number 2 is dartos muscle. Layer number 3 is external spermatic fascia. External spermatic fascia is derived from, bolo, derived from external oblique aponeurosis. External oblique aponeurosis. After that, layer number 4 is cremasteric fascia and cremaster muscle. Cremasteric muscle and fascia. अभी यहाँ पे इस एरिया में एक मसल भी आ गया है, which this muscle and fascia are derived from internal oblique. There is something called as cremasteric reflex. आपको फिजियोलॉजी में सिखाया है cremasteric reflex. इनर साइड ऑफ द थाई को अगर ऑपोजिट साइड ऑफ द हैमर उससे आप ऐसे अगर स्क्रैच करोगे तो देयर इज अ cremasteric reflex. The testes are pulled up. So the function of the function of the cremaster muscle is to pull up the testes. Understand this. This is the deep ring, this is the superficial ring. इसमें से ये स्पर्मेटिक कॉर्ड ऐसे आके टेस्टिस के ऊपर. Cremaster muscle pulls the testes like this in such a way that it clogs the superficial ring. So that is one way of prevention of hernia. कि वो टेस्टिस को अगर ऊपर पुल करता है, टेस्टिस में नॉट मूव अप टू दिस मच, बट वो जो बाकी का सारा चीज जो है ओपनिंग इतना सा है, इसमें से सब कुछ इतना कॉर्ड बाहर गया, अगर वो सब खींचा तो वो ओपनिंग को क्लॉग कर देता है. व्हाट इज दैट मैकेनिज्म कॉल्ड एज? इंग्वाइनल हर्निया पे लेक्चर हुआ आज है, ठीक, उसमें आपको बताएंगे अलग अलग मैकेनिज्म, एक बॉल वॉल मैकेनिज्म, स्लिट मैकेनिज्म. So this cremaster muscle helps that. So that is cremaster muscle. 4 layers हो गए. लेयर क्रमांक 5, इंटरनल स्पर्मेटिक fascia. Internal spermatic fascia, which is derived from mrudula. Internal spermatic fascia is derived from बाजूची मुलगी, बाजूचा मुलगा, बाजूची मुलगी. अरे उभा राहा, उभा राहा, उभा राहा. सगळे तुम्ही, सगळे सगळे. ओम, हा, फेशिया ट्रान्सवर्सालिस. ओम खाली बस. फेशिया ट्रान्सवर्सालिस. इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम फेशिया मृदुला. काय? फेशिया ट्रान्सवर्सालिस. बसा काय. हे सगळे लेयर्स झाल्यानंतर देयर इज ट्यूनिका वजाइनालिस का पराइटल लेयर एंड ट्यूनिका वजाइनालिस का विसरल लेयर. parietal layer and visceral layer. This visceral layer is attached to tunica albuginea.
ट्यूनिका वजाइनलिस, आपको ये डायग्राम याद है? मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया था। क्या है ये पेरिटोनियल सैक, प्रोसेसेस वजाइनलिस, ये प्रोसेसेस वजाइनलिस है। डीप रिंग, सुपरफिशियल रिंग में से स्क्रोटम में आता है। टेस्टिस इन्वेड्स द प्रोसेसेस वजाइनलिस फ्रॉम बिहाइंड, तो मतलब आगे ये प्रोसेसेस वजाइनलिस असा है फुग्यासारखा। टेस्टिस इन्वेड इट फ्रॉम बिहाइंड like this, goes inside. Therefore what happens is the tunica vaginalis is there and medially, anteriorly, lateral, slightly deficient posterior. Oh, posterior part is, it is not covering, tunica vaginalis is not covering the posterior border. Therefore on the posterior border is epididymis. So testis का जो sperms and all, they come out from the posterior border, okay, through the rete testes, and then they go to the duct of epididymis. यहाँ पे मैंने ऐसा कंटिन्यूस दिखाया, बट यू हैव टू अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट की पीछे से इन्वेड करता है प्रोसेसेस वजाइनलिस. म्हणजे हा असा फुगा आहे, त्या फुग्यामध्ये पाठीमागच्या साईडनी ही टेस्टिस अशी आत गेली. सो पीछे का बॉर्डर विल ऑलवेज बी डेफिशिएंट. ओके, देन इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. Tunica albuginea. This tunica albuginea forms mediastinum testis, एक थिकनिंग. ये आपको 12th में था, mediastinum testis था, mediastinum testis. The posterior border of the testis is thick, or the tunica albuginea is thickened to form mediastinum testis. And then suppose this is the testis, then here is the mediastinum testis. Inside the testis there are how many lobules? 200 to 300. In each lobule there are 2 to 3 seminiferous tubules. 2 to 3 seminiferous tubules. 2 to 3 seminiferous tubules. Okay, these tubules, they unite here at the mediastinum testis. They form a network like this, which is called as rete testis. What is mediastinum testis? Thickening of tunica albuginea. What is rete testis? रोहित, mediastinum testis posteriorly लिहिले ना तुमच्या पुस्तकात. What is rete testis? Inside this thickening. Thickening of what, Disha? Thickening of tunica albuginea. Inside this thickening of tunica albuginea, which is called as mediastinum testis, there is network. There is network of these all collecting ducts from the seminiferous tubules, which is called as rete testis. Rete testis. Rete testis. डायग्राम दाखवतो. सो ये ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा जो होता है ना, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, इट लाइन्स द लोब्यूल्स लाइक दिस, इनर पार्ट. ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा. ओके, त्याच्यानंतर कोणाचं लेक्चर? म्हणजे आता मेरे पास टाइम ही टाइम नहीं है, मेरे को टॉपिक कंप्लीट करना है. ओके, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा. मीडियास्टिनम टेस्टिस में ये क्या है? रेटे टेस्टिस. जे आता उशिरा आलेत ना त्यांनी प्लीज लक्ष द्या. नाउ टेस्टिस
has an anterior border, posterior border, lateral surface, medial surface. On the posterior border, ये suppose lateral surface है, there is epididymis. Epididymis as a head, body, tail. Tail of the epididymis continues with vas deferens. Vas deferens. तो कहीं पे यहाँ पे ये रेटे टेस्टिस है. Rete testis. What is rete testis? Where the seminiferous tubules end, they are collecting tubules of the seminiferous tubules, they form a network, the terminal parts of the seminiferous tubules. From this rete testis to the head of epididymis goes some tubules which are called as vasa efferentia. Vasa efferentia. They go to the head of epididymis, and then they drain into the duct of epididymis. Single duct of epididymis. Duct of epididymis. Which continues as vas deferens. 7 meters long. 7 meters long. ओके, इथपर्यंत कळलं. स्वतः जे उशिरा आले त्यांच्यासाठी मी परत सांगतो. स्क्रॉटम, वी स्टार्टेड विथ द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया विथ स्क्रॉटम. तो सातारकर बोलू नका की काय भाऊ भावा. स्किन इज द फर्स्ट लेयर, very hairy, so sebaceous cyst. Then there is no superficial fascia. There is no superficial fascia. Instead of superficial fascia, there is dartos. There is dartos. सकाळी सकाळी मेसेज करतो तुमचा सीआर मला, पाऊस पडतोय सर यायचं का? शाळेप्रती पाणी साचून सुट्टी मिळेल का? सांग सांग बसते सांग सुट्टी मिळेल का? वो स्कूल में रहता है वो सब, तो बताओ क्या तुम. लेयर नंबर 3, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक fascia derived from external oblique epicondylus. Then cremasteric muscle and cremasteric fascia. Aryan, cremasteric muscle and fascia is derived from internal oblique. And internal spermatic fascia, आर्यनच्या बाजूचा मुलगा, राजस्थान ना, तो राजस्थान से. हाँ, उत्तर प्रदेश. क्या नाम है तुम्हारा? चौहान. ओके. What is it but? Which is that layer? Internal spermatic fascia. तो ये हमारे हो गए 5 लेयर. टोटल लेयर कितने हैं फिर? 6 क्या है? चौहान, चूकना मत चौहान. हाँ, ट्यूनिका, parietal layer of tunica vaginalis. Then visceral layer of tunica vaginalis. Then tunica albuginea, and then tunica vasculosa. Tunica vasculosa. इतना सारा लेयर्स होता है. टेस्टिस का आई थिंक हिस्टोलॉजी आपको सिखाया है ऑलरेडी. नाउ द एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस. Anatomy of the testis, very easy. Testis inside the scrotum. Inside the scrotum there is a septum, and there are testes, 2 testes, and they are slightly like this. थोड़े से laterally रहते हैं. So ये anterior border है, posterior border है,
ये मीडियल सरफेस है, लैटरल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये पोस्टीरियर है, एंटीरियर। तो दोनों टेस्टिस ऐसे नहीं रहेंगे, स्लाइटली ऐसे रहेंगे, और उनके पोस्टीरियर बॉर्डर से एपिडिडाइमिस रहेगा। ओके, एंड ऑफ एपिडिडाइमिस और नीचे रह जाएगा। मग लॅटरल मीडियल सरफेस कसा ओळखायचा? ऑन द लैटरल सरफेस, दोनों साइड पे आपको ऐसे दिखेगा, मतलब मीडियल पे भी ऐसे दिखेगा कि एपिडिडाइमिस पीछे है, लैटरल में। ऑन द लैटरल सरफेस देयर यू विल सी अ साइनस which is called as sinus of epididymis, sinus of epididymis। तो टेस्टिस आपका स्पेसिमेन आपको उधर देंगे, उधर एग्जामिनर बोलेगा ये टेस्टिस का स्पेसिमेन उठाओ, तो आप आप वास डिफरेंस को पकड़ के ऐसे उठाओ, ऐसा लटकेगा वो। तो मीडियल सरफेस कौन सा? लैटरल। तो यू लुक फॉर द साइनस, जो साइनस है वो लैटरल है, जो एपिडिडाइमिस है, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, वो सुपीरियर है। तो ये फिर मीडियल हो गया। फिर एंटीरियर बॉर्डर, जहाँ पे एपिडिडाइमिस नहीं है वो एंटीरियर बॉर्डर, जहाँ पे एपिडिडाइमिस है वो पोस्टीरियर। वो पकड़ने के बाद देखने का हेड ऑफ एपिडिडाइमिस वो सुपीरियर। फिर मीडियल लैटरल कैसे समझेगा? साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस। मनीषा, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस कौन से सरफेस पे होता है? लैटरल सरफेस। ओके, तुझ्या बाजूची मुलगी पाणी पिते ती, उभा राहा। एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर कशी ओळखणार? पोस्टीरियरली असतो एपिडिडायमिस, मग तरी पण मग सुपीरियर पोल इन्फिरियर पोल कसा ओळखणार? हेड ऑफ एपिडिडायमिस यहाँ पे रहेगा, टेल ऑफ एपिडिडायमिस इंफीरियर पोल पे। So there are two poles, superior pole, inferior pole. There are two borders, anterior border, posterior border. There are two surfaces, medial surface and lateral surface. That is the anatomy of testes. बस खाली खाली बस। काय नाव तुझं? जोरात बोल शिवाय। Now I am going to talk about some embryology, because आज सडनली आपको टेस्टिस के ऊपर एक ऐसा अपेंडेज दिखेगा, एंड दे विल से दिस इज अपेंडेज ऑफ द टेस्टिस। एपिडिडाइमिस के ऊपर भी एक अपेंडेज दिखेगा, वो बोलेंगे दिस इज अपेंडेज ऑफ एपिडिडाइमिस। फिर टेस्टिस के ऊपर जो अपेंडेज रहेगा वो आपको बोलेंगे दिस इज रेमेनेंट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, और एपिडिडाइमिस के ऊपर जो रहेगा बोले इसको बोलेंगे दिस इज रेमेनेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। थाड़ थाड़ करके आपके ऊपर फायरिंग होगा। उसके पहले आई विल जस्ट टॉक टू यू अबाउट there are three mesoderms. Paraaxial mesoderm, which forms somites. Then intermediate mesoderm, which contributes conzyl. What are the three mesoderms? Ubara. What are the three mesoderms? वो बाजू वाला लड़का, तू क्या बात कर रहा है उसके साथ? मैं इधर यार ये चप्पल पहन के आया, भीग के आया, सब बॉडी गीला है अंदर से। आई वुड ऑल्सो सेड, उसने भी वो बोला कि नहीं आने का, तो मैं बोलता मत आओ यार, आने दो, मैं भी वड़ा पाव खाता हूँ कहीं घर में। काय झालं? बात मत करो ना, तू बैठ, तू खड़ा रहे।
There are three mesoderms. Paraxial mesoderm which forms somites. नाम क्या तुम्हारा? Paraxial mesoderm which forms somites. Intermediate mesoderm which forms the major part of urogenital system, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. And third is lateral place mesoderm, which lateral place mesoderm आपको मालूम है, ऐसे उसका वो splanchnopluric and somatopluric. तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे. We'll just discuss about the intermediate mesoderm. और ये आगे क्या है? सम्यक yolk sac. आगे है yolk sac. This intermediate mesoderm now thickens to form nephrogenic cord. Nephrogenic cord. तुमको इसके लिए खड़ा रखा है ना, ताकि तू वो बाजू के लोगों को पढ़ने देगा. नीचे बैठेगा तो बात करेगा. अभी बात ही नहीं कर सकते ना, अभी तू इतना लंबा है कि तो बात करेगी. नेफ्रोजेनिक कॉर्ड. नेफ्रोजेनिक कॉर्ड. और लड़की बेचारी इतने सब दूर से आए राजस्थान से इधर सीखने को, वो पढ़ने नहीं देता है. वो पढ़ना चाहती, वो देख रहे इधर इधर तू बड़बड़ कर रहा है बीच में. Elevation called as nephrogenic cord. Nephrogenic cord is formed from the proliferation of which mesoderm? सम्यक आंसर देगा तो बैठने को मिलेगा. Which mesoderm? ध्रुवी. Intermediate mesoderm. Intermediate mesoderm. चांस गया तेरा एक बैठने का. Intermediate mesoderm. Inside this intermediate mesoderm, four things are formed. One, genital ridge on both the sides. Genital ridge. आज अभी लंबा चलने वाला है क्लास. ये तो बारिश हो रहा है, इसके लिए मैं मस्त खा पी के आया हूँ. मेरे को भूख भी नहीं लगा है. आपको लगाया genital ridge. Genital ridge. Okay. Then there is a duct called as mesonephric duct. Mesonephric. Nephric म्हणजे something related to kidney. Mesonephric duct. त्याच्या बाजूला एक duct असती, and that is paramesonephric duct. उसके mesonephric के बाजू में, इसके लिए उसका नाम है paramesonephric duct. And then there are tubules. ऐसा दोनों साइड पे होता है. And then there are nephric tubules. So Samyak, what are the four things which are there in the nephrogenic cord? क्या है? और एक चांस है. गोविंद कितने बसता? गोविंद. हाँ बाबा. Govind, what are the four things? Mesonephric duct, genital ridge, paramesonephric duct आणि nephric tubules. These tubules मी त्याला आता इथं नाव देत नाही, nephric म्हटलं. In cervical region they are called as pronephric tubules. दोन पोरी नमिषाच्या बाजूची. उभं काय बघताय खाली तुम्ही? मोबाईल मध्ये गेम खेळताय? मग काय दोघी जणी असं एकत्र काय बघताय? पुस्तक उघडलंय? मग हा तसेच उभे राहा. प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस. See this will extend, the tubules will extend from cervical region, thoracic region, lumbar region, sacral region. जो cervical region में ये जो tubules रहेंगे ना, उनको बोलेंगे pronephros. thoracic lumbar region में रहेंगे, उनको बोलेंगे mesonephros. और sacral region में same tubules जो sacral region में रहेंगे, उनको बोलेंगे metanephros.
From the metanephros develops the kidney. सम्यक ठीक है, सम्यक ही नाम है ना वो सम्यक, और वो दूसरा उसका नाम क्या है? मयंक। देख ही नहीं रहे तो मेरी तरफ, श्रेयसच्या बाजूला बसला ना मयंक सम्यक। काय बोलत होतो आपण? So what is pronephros, mesonephros, metanephros? इधर आ रे इकडे चल, सामान उठा के आ जा इधर, सारा बैग भी चल, फास्ट। तेरे को सिखाई क्या होगा मैं एनाटॉमी, ये तेरी जगह भी बनना करेगी। प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस आणि उसमें से केवल सीआर जो सेक्रल रीजन में होता है उसका नाम क्या है? मेटानेफ्रॉस। वो मेटानेफ्रॉस किडनी फॉर्म करता है, प्रोनेफ्रॉस डिसअपियर होता है, और मेसोनेफ्रॉस से जो वाजा एफरेंशिया हमने डिस्कस किया ना अभी, वाजा दैट इज फ्रॉम मेसोनेफ्रॉस। सो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स they contribute to vasa efferentia. Pronephric tubules in the cervical region disappear, and metanephric tubules in the sacral region they form the kidney. So kidney is formed in the sacral region. Okay, from there the kidneys ascend up. Paramesonephric duct, एका वाक्यात फक्त लक्षात ठेवा, याच्यापासून यूटेरस डेवलप होता है। पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, दो साइड के पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट ऐसे यूनाइट होंगे और ऐसा यूटेरस फॉर्म करेंगे। यूनाइटेड पार्ट फॉर्म्स द यूटेरस, अनयूनाइटेड विल फॉर्म द यूटेराइन ट्यूब्स। पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट विल कंट्रीब्यूट मेजरली टू द फीमेल जेनिटल सिस्टम। दो डक्ट है, उसके लोअर एंड्स यूनाइट होंगे, जो पार्ट यूनाइट होगा वो यूटेरस फॉर्म करेगा, अनयूनाइटेड फॉर्म क्या फॉर्म करेगा? फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेराइन डक्ट्स। सो दैट इज पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट। that paramesonephric duct runs in males। मेल्स में क्या फॉर्म करेगा? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल एंड अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, दो ही चीज फॉर्म करता है। टेस्टिस के ऊपर एक छोटा सा अपेंडेज दिखेगा, वो आपको दिखाएंगे, दिस इज अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, दैट इज रेमेनेंट ऑफ पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट। एंड प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, प्रोस्टेट के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एक छोटा सा यूट्रिकल होता है, विच इज होमोलॉगस टू यूटरस इन मेल्स। फीमेल्स में यूटरस होता है, मेल्स में प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, दैट इज फॉर्म्ड बाय पैरामेसोनेफ्रिक। अदरवाइज मेल्स में पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है। ओके, अपना नसीब, अगर वो हो गया तो यूटरस भी डालो। हाँ, सूडो हर्माफ्रोडाइट, फिर आपने कोई मालूम नहीं अपन कौन है, तो नसीब समझने का कि भगवान को एक बार थैंक यू बोलने का कि भाई पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट डेवलप नहीं हुआ मेरे अंदर, मेल्स। नाउ मेसोनेफ्रिक डक्ट, नाम मेसोनेफ्रिक है तो नेफ्रिक मतलब थोड़ा किडनी को कंट्रीब्यूट करेगा, बोथ सेक्सेस में किडनी को कंट्रीब्यूट करेगा, बोथ जेंडर्स में यूरेटर्स फॉर्म करेगा। यूरेटर्स, कौन यूरेटर फॉर्म करेगा? तमन्ना, मेसोनेफ्रिक डक्ट। कौन? वेदर इट इज मेल और फीमेल, किडनी का कलेक्टिंग पार्ट एंड यूरेटर्स विल बी फॉर्म बाय विच डक्ट? एंड मेल्स में, सो दिस इज मोर फॉर फीमेल्स and this is more for males. Mesonephric duct, males में vas deferens, duct of epididymis, seminal vesicles, ejaculatory duct, ये सब कुछ फॉर्म करेगा
मीजोनेफ्रिक। तो इसका भी एक रेमिनेंट रहेगा, अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडाइमिस करके, मेल्स में छोटा सा, बट इसके ज़्यादा रेमिनेंट्स मिलेंगे फीमेल्स में। इसके रेमिनेंट्स मिलेंगे, पैरामीजोनेफ्रिक के रेमिनेंट्स मिलेंगे मेल्स, मीजोनेफ्रिक के रेमिनेंट्स मिलेंगे फीमेल्स। सो मीजोनेफ्रिक डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेजर पार्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, समझ लो। बट बोथ जेंडर्स में वो यूरेटर फॉर्म करते हैं, बोथ जेंडर्स में किडनी का कलेक्टिंग पार्ट। ओके, सो दैट्स अबाउट द ट्यूब्यूल्स। नाउ कमिंग टू जेनाइटल रिच, ये आज का टॉपिक है। अभी प्रवचन शुरू कर रहे हैं हम लोग। ऐसे हमारे मंदिर में ऐसा होता है, इतना ऐसा आधा एक घंटा बात करने के बाद वो स्पीकर बोलता है कि अभी मैं प्रवचन को शुरुआत करूँगा। अभी तो क्या किया हम लोग क्या है ना, भूखे लोग प्रसाद के लिए जाते हैं उधर, लंगर लगता है कि इधर तो अपन हाजिर हो गए, अभी तुम अभी चालू कर। तो अभी अपना प्रवचन चालू हो रहा है, जेनाइटल रिच। In this genital ridge is actually formed by thickening of the coelomic epithelium. Thickening of what? Coelomic. ये coelomic epithelium है, उसके thickening से फॉर्म होता है। तो इतना गुस्से से मत देखने को। सम्यक मयंक, सम्यक मयंक, तू मयंक। ऐसे सेक्स कॉर्ड्स फॉर्म होते हैं, कॉर्ड्स और सेल। मैंने खाली एक दिखा है, ऐसे 10 ऐसा 4-5 सेल ऐसे मिलके वो कॉर्ड फॉर्म करेंगे, सेक्स कॉर्ड्स। अभी योग सैक से आएंगे सेक्स सेल्स। तो योग सेक से कैसे आएंगे, कोई बता सकता? योग सेक में प्रोड्यूस होते हैं, आपने फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स बोल, गैस्ट्रुलेशन 3 जर्म लेयर्स। तो जब 3 जर्म लेयर्स, त्या 2 मुलींच्या पुढची मुलगी, हां श्रेया, श्रद्धा आहे का? श्रद्धा। When 3 germ layers are being formed, before they are formed, कुछ सेल्स बोलते हैं हम लोग को ऐसा आइडेंटिफाई नहीं होने का है, सेक्युलर रहने का है हम लोग को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, वो सेक्युलर सेल हमारे इधर जाके रुक जाते हैं। मतलब they don't want to identify with ectoderm, endoderm, mesoderm. They form the sex cells. So therefore these cells are called as totipotent cells. मतलब they can form anything. इसके लिए उनका ट्यूमर इज कॉल्ड सैक्रोकॉक्सिडियल टेराटोमा। मतलब वो सैक्रोकॉक्सिडियल टेराटोमा हम लोग देखते हैं ना, उसके अंदर दांत रहते हैं, उसके अंदर बाल रहते हैं, उसके अंदर सब दुनिया भर का सब रहता है। बिकॉज ये सेल्स जो है दीज आर टोटियोपोटेंट सेल्स, दे आर नॉट एक्टोडर्म मेसोडर्म। वो एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म के पहले ही इधर जाके रुक जाते हैं। फिर नाउ जब ये सेक्स कॉर्ड्स बनते हैं तो इधर आके सेक्स कॉर्ड्स में इंसर्ट होते हैं। एवढा आळस मोठ्याने घेतोस। सेक्स सेल्स इंसर्ट कशामध्ये होतात? सेक्स कॉर्ड्स मध्ये। नाउ डिपेंडिंग अपॉन whether it is XX or XY, उसके ऊपर सेक्स कॉर्ड्स की फेट डिसाइड होती है। इफ इट इज XX, द कॉर्ड्स ब्रेक। वो कॉर्ड्स ब्रेक होते हैं एंड ये सेक्स सेल्स, अभी कॉर्ड्स ब्रेक हो गए तो सेक्स सेल्स आर देयर and they are surrounded by follicular cells and the primordial follicles are formed. Cords break हो जाते हैं। ओके,
कॉर्ड्स ब्रेक. X गर्ल, किसी लड़की ने मेरा दिल तोड़ा वगैरह, किसी को बुरा लग रहा है तो इधर से ही शुरुआत. The sex cords they break and they form what follicle. एवढं कसलं रागाने बघते माझ्याकडे पोरगी, मजा करतोय का? काय फॉर्म करतात ते? प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स. सेक्स कॉर्ड्स ते काय होतं? मुलांना जोरात बोला, सेक्स कॉर्ड्स के साथ क्या होता है? एक्स वाई. अगर वो एक्स वाई है तो सेक्स कॉर्ड्स डोंट ब्रेक. The sex cords get canalized to form seminiferous tubules. वो कॉर्ड जो है उसके अंदर they get canalized. प्लीज डोंट माइंड. मैं ये सारा एक्सरसाइज इसके लिए करता हूँ ताकि आपको याद रहे एग्जाम में, बाकी कुछ मेरा दूसरा इंटेंशन नहीं है. They break and here they get canalized, and these other cells which are from the coelomic epithelium, they form follicular cells here, they form Sertoli cells here. इधर वो follicular cells form कर रहे हैं, यहाँ पे क्या form करते हैं? Sertoli cells. समझा आपको? तो both the genitals, not the genital organs, sorry, reproductive organs, ovary and testes, they develop from genital ridge. स्वेनी तुझ्या बाजूला बसलेला मुलगा, आँख क्यों बंद किया तूने? Genital ridge. Genital ridge is formed from thickening of coelomic epithelium over the nephrogenic cord. Nephrogenic cord is formed by thickening of Mayank. अभी मेरा कंफ्यूजन है. तू कौन? सम्यक. Nephrogenic cord is formed from the thickening of intermediate mesoderm. समझे आपको? अभी इश्यू ऐसा है, देखो बैठ गया नीचे, बैठा है कि this whole thing is happening at the level of L2. फर्दर टेस्टिस है, ओवरीज है, L2 के लेवल में फॉर्म हो रहा है. Therefore, the artery supplying the testes arises at L2. The lymphatics draining the testes, they drain in pre-aortic lymph nodes. So patient may come to you. The patient may come to you. Patient may come to you. हाँ तुझ्याकडे तूच with a abdominal swelling. With a abdominal swelling. आप देख रहे that may be. So in case of abdominal swelling, we have to examine the testes of the patient. और टेस्टिस को जब एग्जामिन करेंगे तो समझेंगे अरे इधर कैंसर था और इधर जो अभी स्वेलिंग है that is the pre-aortic lymph nodes which have enlarged due to metastasis. So in case of testicular swelling, we check for abdomen lymph nodes. In case of abdominal swellings, we check for testis, whether it is a cancer. Okay. Now testis descend from there. उसको L2 से स्क्रोटम में जाना है और फिर भगवान उनको बोलते हैं टाइम स्टार्ट्स नाउ 3 months. तुम्हारे पास 6 महीना है नीचे जाने के लिए. 9 महीने 3 या तीसरे महीने में उसको बताते रहे. तो टेस्टिस third month it reaches the iliac fossa. Iliac fossa. 4 to 6 months at deep ring. 7th month in inguinal canal.
8th month at the superficial ring और 9th month वो लोग भागते ना मैराथन खत्म होने के बाद पहुंच गए टाइम। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है? स्क्रोटम के एंड से वो का रास्ता नहीं है, वो ग्यूबेर्नेकुलम। देयर इज अ बैंड ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज ग्यूबेर्नेकुलम which extends from testes to the bottom of scrotum that guides the testis की इधर जाने का है। तो टेल्स ऑफ लॉकवुड करके होता है इसको, कभी कभी पेरिनियम में चला जाता है, कभी कभी प्यूबिक एरिया में चला जाता है। सही रास्ता भूल गया तो गूगल मैप्स नॉट अवेलेबल। पेरिनियल रीजन, प्यूबिक रीजन। अभी पहले के सिर्फ फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती थी तो प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड माँ के घर पे। अभी दे वर्क विथ ऑल दैट एब्डोमिनल 6वें महीने 7वें महीने उसमें वो विरार फास्ट में भी चढ़ती है, विरार फास्ट। और रोहित उधर विरार में भी चल क्लिनिक खोल के बैठा है, कोई आ नहीं रहा है पेशेंट। और विरार की एक प्रेग्नेंट फीमेल 7th month वो विरार फास्ट में ऐसा ऐसे उसको लोग धक्का देते हैं, रूथलेस होते हैं लोग। और फिर उसका डिलीवरी चालू हो जाता है प्रोसेस। तो कैसे कैसे विरार तक पहुंचते डिलीवरी होती है। उधर हॉस्पिटल में रोहित पीडियाट्रिशियन, तो पीडियाट्रिशियन को बुलाते हैं गायनेक डिलीवरी के बाद। फिर वो टेस्टिस तो इधर ही है अभी, 7th month में हुआ ना प्रेगनेंसी। वो विरार फास्ट की तरह वो ऐसा फास्ट नहीं जाएगा नीचे, अपना टाइम लेगा वो। फिर तो इतना घर का झाला ना गोष्ट ऐकना। फिर आगे क्या हुआ सर, बोलो। फिर वो रोहित के पास लेके आते हैं बच्चे। वो क्या होता है ना, वो घर में उसकी मदर इन लॉ रहेगी, वो बच्चे को ऊपर से नीचे देखेगी, उसको देखेगी स्क्रोटम में उनकी वो चिल्लम चिल्लेगा क्या ऐसा बच्चा पैदा किया है वो। फिर वो बोलेंगे नहीं, इधर हमारे डॉक्टर रोहित बैठे उनके पास जाओ, रोहित चेक करेगा। फिर अगर उस पहले बेंच पे बैठता है इसके लिए उसका रेफरेंस, फिर उसको वो देखेगा सर ने बताया था इसके बारे में। वो इंग्वाइनल रीजन में उसको टेस्टिस फील होगा। 2 महीने में ऐसे अपने आप नीचे जा रहे हैं। इधर रोहित के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साईं बाबा बनने के लिए। बोलेगा रोज बच्चे को लेके आओ, फिर टाल का पड़ो आराम से, उसके स्क्रोटम पे भी लगाओ थोड़ा सा पैर में, सर में। मेरे साथ बोलो सब लोग। 2 महीने में वो टेस्टिस ऑटोमेटिकली स्क्रोटम में जाएगा। और वो जो मदर इन लॉ है ना, वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। हमारा बच्चा कुछ नहीं था इधर, वो डॉक्टर रोहित के पास गई ना, कुछ पाउडर ब्लूडर लगाया, ये आ गया इधर दोनों साइड पे, मालूम पूरा एम्प्टी था। मैंने देखा इनको किधर मालूम है डिसेंड ऑफ टेस्ट। कमाओ पैसे बनाओ साइड में, फिर खाली उसके बाद क्लिनिक बंद करने का टाल्कम पाउडर लेके बैठे 1000 रुपए। So that is descent of testes. Undescended testes नहीं होते कभी कभी, testes descend नहीं होते। If they are normally descending that's okay. Sometimes that is undescended testes and sometimes there are ectopic testes. ये 2 और applied anatomy से। Ectopic means वो रास्ता भूल जाते हैं and they may be near the pubic symphysis, they may be around the perineum, किधर भी ये tails of lopud को follow करते हैं gubernaculum की जो, they are ectopic. Undescended they stay here, तैयार ही नहीं है डिसेंड होने को। So then surgical operation से ऐसा एक थ्रेड लगा के उनको पुल करते हैं। क्यों पुल करना चाहिए? बिकॉज उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा नहीं एंड दे टर्न कैंसरस। बिकॉज टेस्टिस को बॉडी का टेम्परेचर नहीं जमता और बॉडी टेम्परेचर इज वेरी हाई।
inside compared to the atmosphere. Okay. Now coming to the last part, sorry, second last part, उसका blood supply and उसके बाद I'll talk little about histology and then we'll stop. देखो हमने 8:30 को चालू किया था, ऐसा मत समझो कि 8 बजे से अब सीखा रहे सब 8:30 को चालू किया था, उसके बाद भी लोग आ रहे थे. आप रियलाइज करते 1 घंटे में कितना सिखा के होता है. अगर आप रोज टाइम पे आओगे एटलीस्ट 8:05 8:10 बहुत लोग आते हैं बाकी लोग. और मैंने आपको एक ऑफर भी दिया था कि आपके प्रीलिम्स के लिए अपर लिम लोअर लिम का मैं सैटरडे आफ्टरनून को रिवीजन लेने को तैयार हूँ, बट आप लोग ने वो ऑफर पकड़ा ही नहीं अभी तक. ऑफर एक्सपायर हो जाएगा बाद में, कूपन कोड खत्म. ओके, सो ब्लड सप्लाई इज फॉर whether it is testes or ovaries. Right now we are discussing about testes. It comes from at L2 level, grossly L1 L2 level, the testicular artery arises from there. Testicular artery arises at L2. L2 का L1 का है बोल रहे, L2 है ना, L2. Now what about the veins? Now suppose this is the testis. The veins, they form a plexus called as pampiniform plexus. क्या फिलोसॉफी है pampiniform plexus के behind? We say the testes are kept outside to avoid high temperature. और उधर हम लोग ब्लड भेज रहे हैं, तो ब्लड इज वार्म. चाय कप से पियो और चाय बसी में पियो, बसी सॉसर पानी कुछ सॉसर में ठंडा होता है ना. सेम चाय स्प्रेड, सेम ब्लड विच इज कमिंग इन द आर्टरी व्हेन इट इज स्प्रेड इन अ plexus, it has a cooling down effect. Therefore there is pampiniform plexus. शिट्टी मारो ना कहाँ कौन मारो. Pampiniform plexus. This pampiniform plexus forms 4 veins at the deep ring, 2 veins at the superficial ring, and these 2 veins unite to form testicular vein. Oh, testicular vein is not a content of spermatic cord. Spermatic cord के contents आज आपको आज नहीं है ना लेक्चर, आज है. कौन है? तो पाऊस थांबेपर्यंत थांबे, आखरी बूंद मिस्टर बीन की तरह. दिस टेस्टिकुलर वेन, बस त्या दिवशी गप्पा मारू नका. दिस टेस्टिकुलर वेन is not a content of spermatic cord. Spermatic cord में क्या होगा? टेस्टिकुलर आर्टरी होगी, वास डेफरेंस होगा, देन आर्टरी टू द वास होगी, पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन्स होगा, बट टेस्टिकुलर वेन नहीं होगा. टेस्टिकुलर वेन बाद में फॉर्म होता है. दिस टेस्टिकुलर वेन ऑन द राइट साइड ड्रेन्स इनटू IVC and the left side vein drains into renal vein. लेफ्ट साइड का जो होता है ना वो रीनल वेन में ड्रेन होता है, राइट साइड का IVC में ड्रेन होता है. ओके, लेफ्ट साइड टेस्टिकुलर वेन ड्रेन्स इनटू रीनल वेन, राइट साइड टेस्टिकुलर वेन ड्रेन्स इनटू IVC. देयरफॉर लेफ्ट साइड पे ना प्रेशर ज़्यादा होता है, वो सीधा होता है ऊपर. सुप्रारीनल वेन ऑल्सो ओपन्स हियर and therefore varicocele are more common on the left side. Varicocele is dilatation of the pampiniform plexus. वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होता है because it instead of going to IVC goes to renal
एंड यहाँ पे सुपरारीनल का एपिनेफ्रिन कंटिन्यूसली उसको प्रेशर बढ़ाता है उसको. So that's about the venous drainage. Lymphatic drainage is pre and para-aortic lymph nodes. Pre का para, वही pre का para, दोनों pre and para-aortic lymph nodes. Now the last part of our today's lecture. ये सब मैं इसके लिए बोलता हूँ ताकि लोग जरा रिलीव होते हैं. अच्छा, अभी कुछ होप है लेक्चर खत्म होने का, कुछ लक्षण दिख रहा है. ये सेल्स ऑफ सेरोटोली है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर. There are two compartments here. Ajay, there are two compartments here. This compartment is called basal compartment. फिर यहाँ पे है tight junction. This compartment is called adluminal compartment. Adluminal compartment. Basal compartment हमें and दूसरा कौन था? Adluminal. Luminal मतलब adjacent to luminal. कलच आता मी जे विचारणार आहे ना त्याचं उत्तर तू देणारस. उभा राहा. In the basal compartment are primary spermatogonia A, primary spermatogonia B, and primary spermatocyte. Primary spermatocyte. Okay? Primary spermatocyte. Hello. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंदर यहाँ पे है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म्स. ऐसा क्यों? बीच में एक टाइट जंक्शन है. रोहित, एनीबॉडी? हे जे आहेत ना स्पर्मॅटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मॅटोसाइट्स, these are diploid. So these are in basal compartment. और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं. कुछ भी उनको खतरा नहीं है ब्लड वेसल्स से, बिकॉज दे आइडेंटिफाई ये अपने ही सेल है, डिप्लॉइड सेल है. मोमेंट दे बिकम हैप्लॉइड, they cross the tight junction and go to the abdominal compartment. Primary spermatocyte से secondary बनता है तो cell becomes haploid. The reason, आँख बंद करके बैठा उसको. The reason क्यों, क्या बता रहा हूँ, क्या बोलूँ? हाँ, right? हिस्टोलॉजी, क्या बात है. खड़े रहो. क्यों ये कौन से सेल है इधर बेसल कंपार्टमेंट में? हाँ, ये कौन से सेल है? So what happens is cells move from here to here when they become haploid. क्योंकि haploid cell इधर अगर रहेगा तो ये मार ही देंगे उसको. Body will kill haploid cells. This last bench, काळा टी-शर्ट, उभा राहा. माझ्या लेक्चर मध्ये डोळे बंद करायचे नाही, उभा राहा. This is my last statement. अभी आपको एक्चुअली खत्म कर रहा हूँ. This is called as blood testis barrier.
What forms the blood testis barrier? The tight junctions between serotonin cells. Why it is there? Because below these tight junctions is the basal compartment in which there are diploid cells. Diploid cells म्हणजे spermatogonia and primary spermatocyte. अजय, का असतं हे ब्लड टेस्टिस बॅरियर? का आपण का एवढं टाईट का मारतं टेस्टिस? मराठीत बोल काय हरकत नाही. डिप्लॉइड कुठपर्यंत डिप्लॉइड असतात? बेझल कंपार्टमेंट डिप्लॉइड होतो. कोणते कोणते सेल्स डिप्लॉइड असतात? स्पर्मॅटोगोनिया आणि प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट. सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट इज haploid and therefore they move from here to here. This whole thing is called as blood testis barrier. Okay, sir, तो बंद कर. Thank you. इतना ऐसा